नमस्कार आदाब सबको, भारत को, भारतवासियों को, जो सुख मेरे सामने है उनको, जो पीछे उन्हें भी, और जो आपके साथ बैठे हैं वो आपका स्वागत करते हैं। राजकुमार साहब, बाएं कहना भूल गया। आपका संबंध हमारी फिल्मी दुनिया से बहुत पुराना है। So we'd like you to put your mental car in reverse gear. We'd like to travel down memory lane. यादों की दुनिया में चलते हैं। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी और फिल्मी दुनिया में आपने कदम कैसे रखा? Tell us about it. My first film was Rangili, directed by Mr. Najm Naqvi, who was the topmost director of that period. That was 50s. And educationally, academically, he was an MA from Aligarh University. And I starred opposite Rihanna. राजकुमार साहब, फिल्मी दुनिया में आपने पहला कदम कैसे रखा? किन परिस्थितियों में? वो तो कोई अजीब गरीब सी बात थी। मैं पुलिस में था और पुलिस स्टेशन के सामने एक जेपी साहब रहते थे, मिस्टर खान करके। आजकल उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है, उन्हें उस वक्त जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता था। उनका एक भाई था अली करके, वो फिल्म के कुछ लोगों को जानते थे। तो वो मुझे हमेशा कहता ऐसा फिल्म में आई, फिल्म में कि फिल्म होती क्या। बदनसीबी से मैं पिक्चर नहीं देखता था, शौक भी नहीं था मुझे फिल्मों का, और अब भी नहीं है। और उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई के बिलाल से, जो अपने ज़माने के मशहूर गिने जाते थे। उनकी वजूहात पिक्चर के अलावा मशहूर नहीं कुछ और भी थी। वो शख्सियत के मालिक थे एक। तो उस वक्त एस सनी हुआ करते थे, उनको भी तस्वीरें पसंद आई और उन्होंने वो तस्वीरें ले जाकर अपने ऑफिस में रखी। तो लाल साहब ने मेरी तस्वीरें उतारी फली मिस्त्री और जाल मिस्त्री के हाथों से। तो वो मेरी कमर में हाथ रख के घुमाते थे मुझे स्टूडियो में, कौन सी फेमस स्टूडियो में। तो मैंने कहा देखिए आप हाथ हटा लेंगे हम ज़मीन पे गिर जाएंगे, मैं हाथ मत रखिए आप। तो इतने में क्या हुआ, वो कहानी दूसरी है। इतने में नजम नकवी अमरोहा के लिए किसी मस्जिद या स्कूल के लिए चंदे बांट रहा इकट्ठा कर रहे थे। तो सनी के आंगन तस्वीर देखी तो वो मेरे पास आए पुलिस स्टेशन पर। वैसे मेरी जिंदगी का फिल्मी लम्हा शुरू हुआ। कभी ऐसा मौका आया, any moment like this when you regretted your decision? Oh no, I don't regret. I don't. Regrets I've never known in life. I've never known defeat, and I've never been enraptured by victory. I'm at a level of equanimity. राज साहब, आपने बहुत सी फिल्में की हैं अभी तक, तरह तरह के रोल अदा किए हैं। बरसों के अलावा तो बहुत कम किए हैं, बाकी काफी किए हैं। कोई ऐसा रोल है that particularly comes to your mind? No. Each role that I do, I did justice to it within the given context. So I never thought that I had failed in that. Pictures may have failed. I remember my pictures used to fail and my price used to go up by 1 lakh. My secretary used to ask me, राज साहब पिक्चर तो चली नहीं, आप 1 लाख में बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा पिक्चर चलने चले, मैं फेल नहीं हुआ, इसलिए 1 लाख बढ़ेगा। ये असली बता रहा हूँ आपसे। जब आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया जी, और आज जो फिल्में बनाई जाती हैं जी, उनमें क्या परिवर्तन है? परिवर्तन साहब यह है कि उस जमाने में तो फिल्में कम बनती थी, थिएटर कम थे, ऑडियंस भी नेचुरली कम थी, इसलिए कि पॉपुलेशन कम थी। और फिर उस जमाने में हॉलीवुड का तो के तासुरात तो हम लोगों पर रहे हैं। उस जमाने में वहाँ पिक्चरें अच्छी बनती थी, कहानियाँ होती थी, जो क्लासिक नॉवेल्स थी वो पिक्चराइज होती थी। उसी हिसाब से यहाँ जो पिक्चर्स बनती थी आमतौर पर उनका सोशल पर्पस होता था। तो अब चूंकि सोशल पर्पस भी वीक हो चुके हैं हम लोगों के, दुनिया के हो चुके हैं, सिर्फ हमारे हिंदुस्तानियों के नहीं। यानी हॉलीवुड वाले बड़ी बकवास पिक्चर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बना रहे, समझे ना। तो वो ही परिवर्तन है और तो कुछ नहीं, इतना ही परिवर्तन है बस।
कोई ऐसा रोल है जो आपने अभी तक ना किया हो जिसे आप करना चाहते हैं? क्या हमारे यहाँ टोटल रोल शायद किसी भी एक्टर को अभी तक नहीं मिला, जिसे टोटल रोल कहते हैं, द टोटल प्ले ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो उस हिसाब से तो यही कहेंगे कि अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं कर पाए और शायद हमारे रास्ते में आएगा भी नहीं जो कर पाएंगे हम। ऐसा है। कभी आपने कैमरा के पीछे जाने की सोची है? नहीं, बिल्कुल तभी। हाँ, तो सामने आके भी भुला देता हूँ घर लौटते हुए। बिल्कुल नहीं, ख्याल ही नहीं आया, दूर दराज से नहीं आया। उसके पीछे जाने के लिए इंसान में खास सृष्टि चाहिए, खास तीनत चाहिए, खास मिजाज चाहिए जो मुझ में नहीं है। इस वजह से नहीं कि मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता, जहाँ तक सिर्फ डायरेक्शन का ताल्लुक है, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ और इतने मरहले तय करने पड़ते हैं डायरेक्टर को, और ख़ासकर वो प्रोड्यूसर भी है तो उसकी जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है कि वो अजीब खास और ख़ास इंसान ही कर सकता है। हाँ, यानी मेरा ख्याल है, जो कि मैं जाहिर कर रहा हूँ, बाकी तो आपके इरादे कुछ और हो सकते हैं। Rajkumar sir, would you like to tell us about any of the great names in the Indian film industry you have particularly admired? As directors, producers, actors? Or That's right. All of them. As all of them. As actors, who are the actors you admired? Apart from yourself. I have respected myself, not admired. Similarly, I have respected a couple of other artists. Raaj Kumar in his own way, Dave in his own way, Dilip in his own way, Ashok Kumar in his own way. And in college days, I remember we used to go to movies once a month. Motilal, Saigal, Jagdish Sethi, Prithviraj Kapoor. And about the present, I hear from my children that Amir is a good actor. They have a screen presence or not, I have no idea. But they tell me he's a good actor. फिल्मों के अलावा राजकुमार किन चीजों के बारे में सोचते हैं? खूबसूरत औरतों के बारे में सोचा करते थे, अब सिर्फ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। और साहब, मुझे खुले आसमान का बहुत शौक है। बालकनी पे जाओ तो आसमान नजर आता है, हरियावल नजर आती, और समुंदर और दरिया का शौक है। आप इन पहाड़ों की बुलंदियों का शौक है। जो आपकी शौक है, इन्हें आप पूरा कर पाते हैं? हाँ साहब, करता हूँ बहुत बुरी तरह, अभी भी करता हूँ। पहले 100% और 50%। Rajkumar Saab, the transition from black and white films to color films. I never give any thought to those propositions. I never bothered about the technicality of movie making because that's not my field. I don't have to know what the lens is and all that. For that, I hire a cameraman. My job is to tell him this much, this much, this much I want. From here to there I want. And he was one of the brilliant movie makers. And he was a person who did his matriculation, cycled down to Madras, bought the press going for about 300 to 500 rupees, became the first person to seek permission from the Voice of India to sell papers in the running trains. They were not allowed before that. And then as he grew up, he started going to the races, and there was a horse by the name Jamnai who used to lose in the races. He bought it, he said, I'll make him win. He made him win. Went to the extent that he bought a studio and named it as Jamnai Studios. He was a short man, but a very great man. He grew to heights. He was very fond of me. I was very fond of him. Once we were talking to each other, and he said, do you know you're talking to the great Vasan? And, but he loved me. And he was a great man. Mehboob Khan was a great man. They were not only directors and producers. As men, they were great. Men of word, men of honor. And that's what interests me in a human being. How do you assess your own contribution to the Indian film industry? No, I'm not contributing much because I'm not a social worker.
or not been one, except that to the extent that I'm honest to myself within my field, to that extent I'm contributing to the society of which I'm a part. आज What I mean? या आज You से clean your own house, you have to keep the whole neighborhood clean. आज से कई सालों बाद जब लोग राजकुमार को याद करेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि जब वो आपको याद करें, what should they think of? Well, I'll be somewhere in heaven, and what do they think of me? I won't bother about it. I won't bother about it. No. लोग कहते हैं और हम लोग सब जानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे फिल्म एक्टर हैं. You are a wonderful father to your children. You are a family man. Who are you? I didn't understand. You yourself have said what I am. I'm a family man. I'm a good father. Who is the real Raaj Kumar? Real Raaj Kumar is not one. He's many. He is different when he's sitting here. He's different perhaps when he's sitting in a chair. He's different when he's outside the room. He's different when he's inside the room. But there's only one integrated factor, and that's character. That doesn't alter. Other things change. आपकी लेटेस्ट फिल्म है सौदागर. इस फिल्म में अपने रोल के बारे में हमें बताइए. Well, I hear that my director has presented me in a very, I should say, brilliant manner. In a very satisfactory manner, I should say. Now it is brilliant or not, well, the audience will decide. Are you nervous about? Oh, nerves. Nerves are not known. I never know nerves. Not in my first movie. Did you enjoy acting in Saudagar? Well, I did like it as an experience. There's one question which I don't know if I should ask you, but maybe Please ask me anything. all right, maybe I should. How is Mr. Subhash Ghai like to work with? Well, it's difficult to say that because he may be different with me, he may be different with you, he may be different with him according to the requirement of the person and his need of that person, in what way he wants to use him. So it will depend on that. आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं? अब दिक्कत तो जिंदगी में कभी हुई नहीं हमें. कोई दिक्कत नहीं. दिक्कत किस बात की? He's a fine person and he's a person who thinks of your welfare. We hear he's a hard taskmaster. I don't know what is taskmaster. I do my job, that's all. What is taskmaster, I don't know, because I have never been in a labor camp. And I don't labor. And he didn't make me labor that way, no. Most of the time not. All right, Because he knew that I'm not given to labor. we won't labor the point anymore. Thank you very much, Raj. No, but I must tell you one thing more now that you put me a question, that he's one of the finest directors who knows how to assemble a very big movie. And so they were positively, he's well multifaceted. And I used to tell him, I don't know what made you sign Raaj Kumar and Dilip Kumar when they're physically at the last fag end of their lives. He said, I started telling me to maza aata hai. So to cast these two people at the stage at which they are and stake about 4 to 5 crores of rupees, I think it requires a very crazy mind. And when I say crazy mind, means a mind which had a tremendous vision about things, that he took them and made this movie. No one else could have done that. That's all I know, and that's enough to tell you what Subhash Ghai is. I wish we had enough time to meet all the Raj Kumars, but we'll have to be satisfied with this integrated whole that we have seen. May